In the name of Allah, I am going to deliver social studies lecture for class 6. Dear students, we are reading our environmental book of social studies, and we are reading chapter number 4, that is in the earliest cities. And today's our topic is life in the city. Life in the city of the earliest cities. I can say Harpan city was very busy place, and we know that these places were on the bank of the rivers. They were very Harpan city was very big, very busy place. Harpan city, a busy place. Why busy place? Because all the people, everyone tried to live in the city. Why? There is availability of there is the every facility for the people, either water or today's if we go in the today's scenario, in cities there are everything, there is every availability of water, electricity, internet, everything. And in the past there was availability of water, so people they try to live on the banks of the river or live in these cities. Harpan city was busy place. There were people who planned the construction of special buildings in the city. There were probably the rulers, so they tried to live in the city, in the Harpan city. It is likely that the rulers sent people to distant lands to get metal. यानी इन लोगों ने अपने जो ये रूलर्स हाकिम यानी बादशाह लोग, यहाँ पे हरपन सिटी में बादशाह लोग अक्सर बेशतर रहा करते थे, और इन्होंने अपने नौकरों को या दूसरे लोगों को जिन पे ये हुक्म चलाते थे, जिन पे ये हुकूमत करते थे, इन्होंने उनको दूर दराज इलाकों तक भेजा. किस लिए? ताकि वो वहाँ से मटीरियल, कभी प्रेशियस स्टोन्स, कीमती वो यानी कीमती पत्थर या ये दहत लाएं वहाँ से, या और कोई चीज़ वहाँ से लाएं, जिन चीज़ों के ये ख्वाहिशमंद थे ये हरपन लोग, इसलिए उन्होंने उनको दूर दराज इलाकों तक भेजा. और उन्होंने अपने इन मकानों में या अपने इन महल खानों में अच्छी चीज़ों को रखा, यानी उनके ऑर्नामेंट से वो जेवरात या सोने के चीज़ें थी, कभी कभी बर्तन भी उनके पास हुआ करते थे सोने के या कांसे के थे या और किसी धात के बने हुए थे. और इन्होंने खूबसूरत बेड्स वहाँ पे रखे थे, जिस तरह हम फ्लावर बेड्स आजकल बनाते हैं, गुलदस्ता, इसी तरह उन्होंने भी अपने ज़माने में खूबसूरत वो बेड्स रखा अपने इन इमारतों में, अपने इन पैलेसों में वो रखते थे. और दूसरा जो है यहाँ इनके महल खानों में दूसरी चीज़ें वो है कि कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं जिन चीज़ों पे इन्होंने, कुछ मेटल्स ऐसे मिले हैं जिन चीज़ों पे उन्होंने ये मतलब ऐसे स्क्रैप्ड किया है, राइटिंग की है. लेकिन कैसे राइटिंग की है? उन पे ऐसे वो खदाई उनको कहते हैं कि ऐसे मतलब वो जेवरात से ऐसे उसमें वो बर्छी डाल के उस पे लिखा था कुछ. अब ऐसे निशानात है वो इन्होंने, जो हमारे स्कॉलर्स हैं जैसे आसार कदीमा के स्कॉलर्स हैं, उन्होंने बहुत सी कोशिश की कि हम इन निशानात को पढ़ पाएं, लेकिन वो नाकाम रहे. उन्होंने उन निशानात को, वो कुछ सबक उन्होंने उस पर लिखा है, वो क्या लैंग्वेज थी उस ज़माने में, उन्होंने ये माहिर आसार कदीमा के जो माहिर हैं, स्कॉलर्स हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की कि हम उन निशानात को या हम उस ज़बान को पढ़ पाएं, लेकिन वो नाकाम रहे, वो उस ज़बान को नहीं पढ़ पाए. और क्या चीज़ें थी वहाँ पे? और बहुत सारी चीज़ें मिली वहाँ पे. वो सील्स कहते हैं कि ऐसे ये चीज़ें मिली वहाँ पे जिनसे इन्होंने उसको ऐसा पैक किया था उन चीज़ों को, ताकि उस पे पानी अगर पड़े तो पानी उस पे कोई असर ना करे. इस तरह सील्स को कहते हैं. यानी एक दरियाई जसीम अगर उसकी वो चमड़ी जो है जो उतारती है, फिर हम इसका कवर करते हैं उन चीज़ों पे, तो उस तरह से इन हरपन लोगों ने, हरपा के जो लोग हैं, वो जसीम, जो वो समंदरी जसीम वाला वो बड़ा ये था, तो उसकी वो चमड़ी उतार कर उन्होंने अपने इन चीज़ों पे उसका कवर किया.
تو وہاں اور بھی یہ مطلب ان شہروں سے ان کی ان محل خانوں سے یہ بھی یہ ہمیں ملتا ہے کہ وہ یا تو وہ مین اینڈ وومن بوتھ they both worked, either they were crafts person, they were crafts person, either because all kinds of things have been found either in their own homes or special workshops. یعنی ان کے لیے کچھ خاص ورکشاپس تھے یا وہ چیزیں ان کے ورکشاپ سے ملے تھے یا ان کے اپنے مکانوں سے ملے تھے. یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ان کے ورکشاپس تھے یا ان کے مکان تھے, لیکن چیزیں ملی ہے کرافٹس میں ان کی چیزیں ملی ہے وہاں سے. People were traveling to distant lands or returning with raw materials and perhaps stories. Many terracotta toys have been found, and children must have played with these toys. اور کچھ ایسے وہ کھیلنے کی چیزیں بھی ملی ہیں ان کے ان محل خانوں سے یا مکانوں سے کہ ایسا لگتا ہے کہ یعنی وہ کھلونے ہیں چھوٹے چھوٹے, ان جانوروں کی شکلیں ہیں یا کسی جانور کی بڑے جانور کی شکل ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ ان کے وہ بچے جو ہیں وہ شاید ان کھلونے سے کھیلا کرتے تھے. تو ہم نے اب کیا بنانا ہے, میک اے لسٹ آف پیپل ہو لیوڈ ان دا سٹی. ہم نے ایک لسٹ بنانی ہے ان لوگوں کی جو ان شہروں میں رہا کرتے تھے. ویئر اینی آف دیز پیپل لسٹڈ ایز لیونگ ولیجز سچ ایز مہگرا, یعنی وہ ان سے ملتی جلتی ہے جو مہگرا میں رہا کرتے تھے. آپ اگر اپنی کتاب بک پیج نمبر 27 پہ دیکھو گے تو یہاں پہ آپ دیکھو گے اسٹریٹ ان موہنجودارو ود اے ڈرین above a well, for left a harpen seal, the sign on the top of the seal are part of a script. This is the earliest form of writing known in the subcontinent. Scholars have tried to read these signs nishanat. اگر ہم یہاں پہ دیکھیں گے, آپ اگر اپنی کتاب پہ بک پہ دیکھو گے آن پیج نمبر 27, تو یہاں پہ یہ دکھایا گیا ہے, یہ اس کے کچھ نقشے دکھائے گئے ہیں اس سٹی کے, اس ہرپن سٹی کے لوگوں کے, وہ جن کے وہ محل خانے تھے یا ان کے وہ مکانات کیسے تھے. ٹاپ اسٹریٹ ان موہنجودارو ود اے ڈرین ابو اے ویل, یہاں پہ ہم دیکھیں گے ڈرین کیسی بنائی گئی ہے یا ویل کیسا بنایا گیا ہے. فار لفٹ ہرپن سیل, تو بائیں طرف دیکھیں گے ہرپن سیل کی یہ جو دکھائی گئی ہے یہاں پہ. the signs on the top of the seal are part of a script. This is the earliest form of writing known in the subcontinent. Scholars have tried to read these signs نشانات انہوں نے کوشش کی پڑھنے کی, but we still do not know exactly what they mean. Left terracotta toys. تو اس طرح سے ہم نے یہاں پہ آج ریڈنگ یہاں لائف ان دا سٹیز یہ دیکھ لیا ہے کہ لوگ کیسے یہاں پہ تھے, انہوں نے کیا کیا چیزیں بنائی تھی, یہ رولرز تھے یا عام لوگ تھے. تو انشاءاللہ کل ہم اسے آگے بڑھیں گے. آج اتنا ہی. It is enough for today. Goodbye. May God bless you. Thank you. Stay home. Stay safe.